on Wednesday, the Prime Minister Narendra Modi is seen attending the Ganesh Puja organized at the house of Supreme Court Chief Justice CJI Chandrachud. In the video, the Chief Justice and his wife are seen welcoming the Prime Minister and later performing puja together. The Prime Minister himself shared this video on his personal X handle and wrote in Marathi, attended Ganesh Puja at the residence of Chief Justice CJI Chandrachud ji. May Lord Ganesh grant us all happiness, prosperity and good health. Now a question has raised as to whether a judge should practice a degree of detachment commensurate with the dignity of his office. There should be no act or omission by him which is inimical to his high office and the public respect for which he holds office. Quoting this part of the Code of Conduct for Judges, senior lawyer Prashant Bhushan made this comment on the video and news in which Prime Minister Narendra Modi has gone public regarding Ganpati Puja at the house of the Chief Justice of the country, CJI Chandrachud ji. Mr. Modi to the residence of the Chief Justice is disturbing on two counts. One, that, and more importantly, that the judiciary is tasked with the idea, with the responsibility of protecting fundamental rights of citizens, which is primarily being assaulted by the executive. And it is also made responsible for ensuring that the executive functions within the bounds of its authority. And that is why the Code of Conduct for Judges had laid down that judges must maintain a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. Now, what the Chief Justice has allowed in this case is the Prime Minister to visit him at a private religious function. Now, firstly, it's totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a particular religious function, because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. And therefore this was totally inappropriate, and in my view it's a violation of the Code of Conduct for Judges. Like Prashant Bhushan ji, well-known lawyer Indra Jaisingh ji also has commented on this meeting. She has written that the Chief Justice has compromised on the separation of powers between the judiciary and the executive. This has led to loss of trust in the Chief Justice. So on this meeting, Shiv Sena UBT faction leader Sanjay Raut has said that if the protector of the constitution meets politicians, then doubts are bound to arise in the mind. He said, Ganesh festival is going on. People are visiting each other's houses. I do not have information about how many houses the Prime Minister has visited so far. But the Prime Minister went to the Chief Justice's house and they performed आरती together. ऐसे है कि ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने
एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है, तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। Reacting to Sanjay Rath's statement, Manan Mishra, the president of Bar Council of India, and recently was elected as the Rajya Sabha member from BJP, he said, those who are involved in some cases will protest a little. They know that this will not affect any decision of the Supreme Court. It was a socio-religious ceremony. कल प्रधानमंत्री जी CJI जी के घर में गणेश पूजा के अवसर पर गए थे। अब उसमें बहुत सवाल उठे हैं, संजय रावत, इंदिरा जयसिंह लोगों ने भी सवाल उठाया। सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संजय रावत जी सीजन लीडर हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों के जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती, फेसबुक, फेस टाइम पे, व्हाट्सएप पे बात हो जाती। प्रधानमंत्री जी CJI के यहाँ चले गए, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है हमारे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो इसकी शिकायत होने लगी। The question is here, the private public meeting of two persons and those who are holding two very important constitutional posts cannot become normal, because there is neither any ordinary or regular practice, nor is there any such example in the recent past. At present, it is not known whether Justice Chandrachud had sent the invitation for this festival to the Prime Minister Modi or others, or whether the Prime Minister himself had come to attend the puja. No one has any problem with personal faith, but it's natural for some questions to arise from this union of the executive and judiciary. The Prime Minister, he wants to express something, that is why he put this video on his X handle. And what was his views? This is the question.